So I had already covered the three functions of the stock exchange: safety of transactions, because credit-worthy companies are there, and there's a lot of rules and regulations which SEBI has imposed on the working of the stock exchanges; contributes to economic growth by making indirect capital formation possible; is spreading of equity culture, because the message that a stock exchange gives is that we are here to protect and promote your investments. So don't bother, come and invest. So the next function of a stock exchange is providing a scope for speculation. Now, what is speculation? Speculation, the literal meaning of speculation is buying in order to sell at a higher price later on. Okay. So when it is done, in other words, this is called as betting. But difference kya hai? When it is done in a legit manner, in an organized manner, as in the stock exchange, it is called as speculation. So why would anybody invest their money in securities, in shares or debentures of a company? Purpose सीधा सा है कि भाई हम उससे हमने invest किया, so हम उसका dividend या interest लेते रहेंगे, and whenever we'll feel that the price has gone high and I need my money, I'll sell it. So I'm investing basically because I may be in a position to sell it at a higher price later. That is called as a speculation. So stock exchanges provide a scope for healthy speculation. It invites the people to use their mental aptitude and invest the funds so that they can make more money in future. Next is promotes habits of savings and investments. इसे हम कहते हैं thrift. This is called as thrift. Just like banks, stock exchanges also encourage the habit of thrift. So thrift has two parts. One is savings. So you not only save your money, but the investors also are able to invest. That means they are able to multiply the money. And you can see over here, the attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities rather than investing in assets like gold and silver. So putting your money in gold securities is better than purchasing gold itself. And the last one is pricing of securities. ये हम already कर चुके हैं in the functions of financial market also. इसलिए इसको दोबारा करने का हमें जरूरत नहीं है. Okay. So 4 functions of the financial market and 6 functions of the stock exchange. Mark it out. I feel that you are going to get a question out of this too. इस बार मुझे लग रहा है कि एक तो इसमें से आएगा. Okay. So now I'll go back to the difference between the primary and the secondary market here. तो दो differences हैं बेटा हमारे पास, money market and capital market, and primary market and secondary market. I'll quickly take you through that. So money market के participants सारे होते हैं except for individual investors. Capital market में ये सब आ जाते हैं and individual investors भी आ जाते हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. इंस्ट्रूमेंट्स हम कर चुके हैं. इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के हमने 5 किए थे, वो यहां लिख देंगे. और कैपिटल मार्केट में आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. इन्वेस्टमेंट आउटले, दिस इज इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट आउटले इन मनी मार्केट इज लार्ज, एज वी डिड कि हमारे जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो ही द मिनिमम अमाउंट इज 25,000 एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ. Whereas investment outlay in capital market is small. You have done पूरा आपने what you have done is this the second book in accounts, not financial markets, company accounts aapne kiya, and you have done a company issued shares at the rate of 10 each, at the rate of 50 each, 20 each, 100 each. So the outlay is very small. It is 10 to 100. There are companies who sell their securities as 500 also. ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती, लेकिन ज्यादातर क्या है, small outlay रहता है. Then the duration, we know that the duration of money market is max 1 year and capital market may be n number of years. Liquidity is much more in money market. It's highly liquid, highly volatile. Capital market की liquidity भी है. It is liquid but less than money market क्योंकि time period दोनों का different है. Then safety of money market is high because highly credit-worthy institutions and companies, including RBI, participate in money market. Capital market में it is riskier than money market because some compromised companies may also be a part of it. Now अगर हम बात करते हैं, we have regional stock exchanges also. तो regional companies जो हैं वो थोड़ी सी compromised position में भी हो सकती हैं. तो safety capital market में कम है. इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के अपना पैसा लगाएं. And expected return, obviously money market में पैसा कम समय के लिए रहता है तो the return is low. Capital market is long-term funds market, so the returns are high. Moving on to the next comparison. Usually when we talk about
money market and money market and capital market and primary market and secondary market. Usually you get a 3-marker question और उसमें आपको parameters दिए होते हैं that distinguish between these two concepts on the basis of this. So coming on to primary and security, आपको पहले बताना पड़ेगा. पहले तो whenever you get a question of this kind, you first tell what is the meaning. This should be your first factor. Okay, so the meaning of primary market is the one where the securities are issued for the first time, fresh issue markets, new issue markets, and secondary market is the one where the existing securities are traded. Okay, then companies involved. Primary market में company securities are directly sold by the companies to the investors, and in secondary market, the securities are bought and sold in between the investors and the probable investors. So the transactions are between the investors only. कैपिटल फॉर्मेशन ये मैंने आपको बताया था, यहाँ डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यहाँ इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन है. बाइंग एंड सेलिंग in primary market, only buying of securities takes place. When I'm saying buying of securities, I'm telling it from the investors. That is your household's point of view. So they only buy the securities in primary market. Secondary market में buying and selling. That means disinvestment and reinvestment भी होता है. In primary market, prices of the securities are determined by the company. In secondary market, it's determined by the forces of demand and supply. प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, जबकि सेकेंडरी मार्केट का एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन है. वी नो एनएसई एंड बीएसई एग्जिस्ट. ऑलराइट, सो this is it, and we move on to something which is pretty scary for the students. It is the steps in the trading procedure. अब बेटा जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इतना सारा आपको नहीं लिखना होता है, क्योंकि अगर इतना लिखोगे तो 3 घंटे का नहीं 6 घंटे का पेपर बना के आओगे तुम लोग, which is really not possible. So, steps in the trading procedure on a stock exchange. The first step is selection of the broker. अब इसको कहानी की तरह करोगे ना तो आपको easily हो जाएगा. So what is the first step is that anyone who is interested, or we say the prospective investor who is interested in investing in the securities, will select a broker. So the investor selects a broker and provides certain information to the broker. What is that information? He will provide his PAN card number, his Aadhaar card number, his date of birth and address, educational qualification, bank details, etc. Because only majors can invest, minors cannot invest. So PAN card details, Aadhaar card details, name, address, etc. bank details ये आपको provide करना पड़ता है broker को. तो first is selection of broker. फिर सेकेंड स्टेप क्या आता है? ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट. A demat account is open. Demat is a short form or acronym for dematerialization account. It is an account through which securities are bought and sold in electronic format. इतना लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ लिखोगे a demat account needs to be open for trading in securities. It is an account which is opened with DPs, depository participants, and it is through this account that securities are bought and sold in electronic form. ठीक, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है बस. तो जब हम डीपीज की बात करेंगे तब हम एनएसडीएल और सीडीएसएल की बात कर लेंगे. सो आई एम नॉट टेकिंग इसका आपने. सो पहला क्या हुआ? Appointment or selecting a broker. Second is opening a demat account. Third is placing an order. Now the investor places an order with the broker. While placing an order, he needs to very clearly specify the number and the amount of shares that he wants to buy or sell. Okay, I repeat, he has to very clearly specify the number or amount of shares that he wants to buy or sell. Then fourth step is matching. Now the broker logs into the his terminal, and tries to match the order. And when he is able to match the order, he moves on to the next point, that is execution the order. So यहाँ पे जब हम placing an order है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ होता है order confirmation slip. This you need to know. So when the investor places an order with the trader or broker, the broker issues an order confirmation slip or order confirmation note. Okay. Once the order is matched, the order is executed. The moment the order is executed, the broker issues a ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप. इन दो डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान रखिएगा. सो जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप यूज होता है. व्हेन द ऑर्डर इज मैच्ड एंड एग्जीक्यूटेड, देन ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इज इशूड बाय द
broker to the investor. So how many steps? We have done 4 steps. Fifth comes issue of contract note. This is the fifth step. Within 24 hours, okay? And rather you can say within 24 hours, immediately on that day only. So we can rather put it as 24 hours. Within 24 hours, the broker issues a contract note to the investor. The contract note is a detail of the number of securities bought and sold. It gives in clear black and white as the number of shares bought and sold, the price at which the transaction has taken place, the date, the time of the deal, the brokerage charges, etc. And you can see the contract note also contains a unique order code which is assigned to each transaction. तो जो भी transaction होता है उसमें unique order code होता है, right? So पहले क्या हुआ? जब ऑर्डर मिला तो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप गई, देन द ब्रोकर गोज ऑनलाइन एंड मैचेस द ऑर्डर. Once he finds the perfect match, then he executes the order. Once he executes the order, he issues the trade confirmation slip कि trade has taken place, यानी आपका जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया था वो एग्जीक्यूट हो गया है, ट्रेड कंफर्मेशन. सो उसमें से क्या था, दैट योर ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, दैट्स इट. उसमें डिटेल्स नहीं होती हैं. डिटेल्स कहाँ आती हैं? एट नंबर 5, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. ओके, नाउ माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं और अगले 2 7, पर हमारी बुक्स में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता रही हूं इन अ डिफरेंट वे. सो 5th के बाद हमारा 6th स्टेप हम जो लेंगे, 6th step is settlement cycle, or you can say pay in day rather. Pay in day. Now, what is this pay in day? Pay in day is the day on which the broker transfers the securities or the money to the investor. I repeat, pay in day is the day when the broker transfers the money or the securities to the broker. So that will be 6th step. 7th step comes settlement cycle. Settlement cycle means the duration in which this entire transaction of receiving the order, executing the order, and making the final settlement takes place. So settlement cycle is the cycle in which this entire transaction takes place. In your books, in NCERT books, it is given as T+2. राइट, आपकी बुक्स में T+2 दे रखा है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे. इसको यहां भी बता दें, नाउ द सेटलमेंट साइकिल टेक्स प्लेस ऑन अ रोलिंग बेसिस, रोलिंग सेटलमेंट बेसिस. रोलिंग सेटलमेंट बेसिस का मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ट्रांजेक्शन मंडे को किया या ट्यूसडे को किया, आप जिस दिन भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपका सेटलमेंट उस डे से ही शुरू हो जाएगा. क्योंकि पहले क्या होता था, वीकेंड सेटलमेंट्स होते थे, लेकिन अब फिक्स डेज कोई नहीं है सेटलमेंट के. अब आप जिस दिन भी करोगे ट्रांजेक्शन, जिस दिन भी आप सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करोगे, उस ट्रांजेक्शन डे के +2 days में, आपकी बुक्स में दे रखा है +2 days, बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग. नाउ द सेटलमेंट साइकिल इज T+1 व्हेन सिंस जनवरी 2024, आप इसको कोट कर सकते हैं, सिंस जनवरी 2024 द सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन T+1 day, transaction +1 day. What does it mean to say? If your transaction has taken place, let's say on Monday at 12:30 p.m., ट्यूसडे 12:30 PM तक ये ट्रांजेक्शन का पूरा सेटलमेंट खत्म हो जाना चाहिए. दैट इज ट्रांजेक्शन +1 day. ओके, सो T+1 day. सो आई रिपीट, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद हमने क्या लिया? पे इन डे. 7th आया सेटलमेंट साइकिल. 8th आएगा हमारा पे आउट डे. पे आउट डे इज द डे ऑन विच द सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड by the broker to the stock exchange. The securities or the money is transferred by the broker to the stock exchange. And then comes delivery of shares and making payments. It is the day on which the stock exchange is going to swap the transactions and final settlement takes place. I repeat, delivery of shares and making payments. On this day, the stock exchange swaps the securities and final settlement takes place. आप यहां देख रहे हैं T+2 with effect from April 1. आप देख रहे हो यहाँ with effect from April 1, 2003 दे रखा है, but now that it has changed, it has become T+1 day from January 2024. I am taking you through this process once again, boys and girls. सबसे पहले क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट. थर्ड इज प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर. फोर्थ इज मैचिंग द ऑर्डर. फिफ्थ इज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर.
Fifth is executing the order. Sixth is issue of contract note. My bad. That's why I was thinking 10 steps in total. So sixth is issue of contract note. Seventh is pay in day. Eighth, settlement cycle. Ninth, payout day. And 10th, final settlement. So final settlement is the day, as I told you, when the securities are swapped, securities or cash is swapped by the stock exchange and the final settlement takes place. अब हमारे पास क्या रह गया? डीमटीरियलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, ये दो चीजें हैं. तो इससे पहले मैं आपको एक बार डिपॉजिटरीज का भी बता दूं, बिकॉज देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरीज ऑल्सो. सो व्हाट आर डिपॉजिटरीज? डिपॉजिटरीज, सो इन आवर कंट्री देयर आर टू नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज, NSDL, National Securities Depository Limited, and Central Depository Services Limited. These are the apex bodies where all the securities which are being traded in India are kept in electronic format. So you can say these are the servers. So the two national level servers are operated by NSDL and CSDL, and all the securities of being traded in India are kept the servers of either NSDL or CSDL in electronic formats. Now what happens is that depository participants, they take membership of these depositories. Now, what are depository participants? They may be banks or they may be a firm of brokers who takes membership of these depositories so that the investors, that is the households, can open accounts with them and trade through it. सो जितनी भी हमारी दो जो नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज है, उनके मेंबर्स को हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं. इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास ही इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट्स खुलवाते हैं. ऑलराइट, सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरीज एंड द इन्वेस्टर्स. ओके, so there is no direct contact between the depository and the investor. The depository interacts with investors through depository participants also, जो मैंने आपको बताया, depository participants के थ्रू ये डील करते हैं. तो ये है आपको डिपॉजिटरी. सो क्या फंक्शन है डिपॉजिटरी का? वो सिर्फ सर्वर है जिसमें सारा डेटा है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू हमारा पैसा जाता है. Now coming on to dematerialization and demutualization. What is dematerialization? It removes materialization. So conversion of paper documents, of conversion of physical securities into electronic format is called as dematerialization. Any kind of paper, whether it's these notes over here or your notebooks or your books, they always are at a risk. They may be spoiled, they may be lost, they may be torn. So in order to avoid, eliminate this problem, now the securities are not bought and sold as in pieces of paper. Rather, they are dealt in electronic format, digital format. And this process of converting physical securities into electronic format is called as dematerialization. Okay? आज ही मैंने एक चीज और पढ़ी है. This is called as rematerialization. What is rematerialization? Converting of digital securities into paper format, physical securities. It is rematerialization. Benefits का हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब आप इसको पढ़ लेना. I'm not going to take it. It saves, from all kind of hassle. Your securities are at your beck and call. You can check out your securities at any given point of time. And there is no problem of forgery, theft, spoilage, or paper being torn, or, all these problems related with paper. Constituents of depository participants, I've already told you. Features का मतलब नहीं है हमारा. You don't have to do this. ये मैंने आपको बता दिया. The depository participant is an agent and investors interact with the depositories. You can also see that any financial institution, who can be a DP? Any financial institution, a share broker or a bank can become a DP after registration with SEBI. Okay, ये चीज आपके काम आएगी कि DP बनने के लिए क्या करना पड़ता है. जैसे Zerodha है, Grow है, ये क्या है? ये भी तो आपके सारे DPs ही हैं. So they also have got themselves registered with SEBI, and that is how they are acting as DPs. Working of a demat account, you don't have to go into these many details. I mean, if you want, you can read it. I'm not going to take it over here. You just need to do what is a demat account. So working of a demat account, आपको इतना डिटेल में नहीं करना है. No point. NSE नहीं है हमारे सिलेबस में.
BSc नहीं है सिलेबस में, छोड़ दीजिए, सेबी पे आ जाते हैं। सेबी हमारे सिलेबस में है। सो व्हाट इज सेबी एंड व्हाई डू वी हैव सेबी? So obviously you need to know that what is the date when it was set up. So it was set up in 1988. The purpose was to regulate the functions of the securities market. We say that SEBI is the watchdog of the securities market, and its purpose, we say there are basically two purposes. हालांकि आपने functions किए हैं, but basically we say the function of SEBI is to protect and promote the interest of the investors. I repeat, protect and promote the interest of the investors. तो अगर आपसे पूछा जाता है what is the objective, protect and promote the interest of the investors. Okay. However, we say that SEBI became a legal a corporate, that is a statutory corporation, in May 1992. It was given an autonomous status with a perpetual succession. And that's it. We don't have to do all this. Coming on to रोल भी नहीं करना है, सीधे आ जाइए। अब आपको क्या करना है? सीधा, व्हाट इज सेबी, व्हेन व्हाट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज दिस पर्पस? पर्पस मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। आपको ऊपर लिखा है द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। एंड तीसरा क्या आया है? रेगुलेट। तीन तरह के फंक्शंस होते हैं, तीनों यहाँ पे डाल दिए गए हैं। सो प्रोटेक्ट क्या करना है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। प्रमोट क्या करना है? प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड इक्विटी कल्ट। एंड रेगुलेट क्या करना है? रेगुलेट करनी है एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ऑल द प्लेयर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंड व्हेन आई से ऑल द प्लेयर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, तो इसमें बैंकर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स सब आ जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल द स्टॉक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। Okay. Now objectives. There are 4 objectives. Beta, whenever you get a question on SEBI, please be very careful. आपसे objectives पूछे जा रहे हैं या functions पूछे जा रहे हैं, because functions 3 है अलग और objectives 4 हैं. So what are the objectives? The first objective is to regulate the stock exchanges and the securities industries. You can also see to regulate the stock exchanges and all the participants associated. Second is to protect. क्या प्रोटेक्ट करना है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, एंड गाइड एंड एजुकेट देम। व्हाई यू एंड मी? बिकॉज हमारे पास और भी बहुत काम है जिंदगी में करने के लिए। हमें सिक्योरिटीज मार्केट का कोई, वी डोंट हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट if we invest our money, it is safe, it is protected. So protect the rights and interests of the investors, particularly retail or individual investors. Then the other one is to prevent. What is to be prevented? Preventing trading malpractices and achieving a balance between self-regulation of business and its statutory regulations. You can simply write preventing trading malpractices and encouraging fair play. Last आ गया regulate. So 2 चीजें रेगुलेट में आ रही हैं बेटा, regulating and developing a code of conduct and fair practices by intermediaries. So here we are talking about regulating the stock exchanges. Here we are talking about the regulating the intermediaries like brokers, merchant brokers, solicitors, investors, etc. And in here we are talking about prevent and promote. So what I always tell my students is, remember इसका क्या है? R2 and P2. रेगुलेट करना है स्टॉक एक्सचेंजेस को और रेगुलेट करना है बाकी इंटरमीडियरीज को। एक पी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड दूसरा पी है प्रिवेंटिंग मैल प्रैक्टिसेस। सो R2 P2, 2 regulations, 1 protection and 1 prevention. Moving on to functions of SEBI: protective functions, developmental functions, and regulatory functions. So let's dive in. First of all, we'll talk about protective functions. It is easy. Protective functions starts with P, and there are 4 protective functions starting with P. So this is P4. These are the protective functions given in your book. ठीक है? तो अब इसको समझ लो अच्छी तरह से। प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात जब मैं कर रही हूं तो इसको हम कहानी क्या कराएंगे कि द फर्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन is to protect the individual investors, particularly the retail investor. Okay. So protecting the retail investor. अब ये कैसे करेंगे? By prohibiting fraudulent and unfair trade practices. So पहला P आया, protecting the
इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली द रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये पहला फंक्शन हुआ। सेकंड, कैसे करेंगे? बाय प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रेजिंग, मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। ओके। तीसरा हम क्या करेंगे? प्रमोटिंग ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस। तो प्रोहिबिट करनी है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड क्या करना है? प्रमोट करनी है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द मार्केट। और अगर तब भी काम नहीं होगा तो लास्ट आ जाएगा हमारा इम्पोजिंग पेनल्टीज। तो ये जो आ रहा है पी, द फोर्थ पी, इम्पोजिंग पेनल्टीज on unfair trade practices. So I repeat, protecting the rights of the investors. कैसे? By prohibiting unfair trade practices, promoting fair trade practices and imposing penalties अगर तब भी नहीं मानते हैं। तो ये हुआ हमारा P4, protective functions. Okay. Then I take you to regulatory functions. Now, if you look at regulatory functions, my dear boys and girls on my screen, there are 4 R's highlighted over here. So regulatory functions, it starts with R. So there are 4 R's. So 4 R and then 3 more functions are there. I had developed some code. I have forgotten to write it over here. Yes, I have it here. I very much have it over here. So R4 and then PLC. प्रोएक्टिव लर्निंग सेंटर वी कैन से। सो R4। अब ये 4 R क्या है? 2 registrations है और 2 regulations है। So 2 R, 1 like 2 R's is for registration and 2 R's for regulations. So registration किस किसका होना है? पहला registration of brokers and sub brokers, and second is registration of collective investment schemes and mutual funds. I repeat, registration of brokers and bankers and registration of collective investment schemes and mutual funds. So 2 registrations, 2 regulations. Regulation of stockbrokers, portfolio exchanges, underwriters, merchant bankers, and other players of the market. Simply, so regulation of brokers, jobbers, underwriters, sub-brokers, and other players of the stock market. And the second is regulation of takeover bids by the companies. So 2 registrations, 2 regulations. And then we come on to PLC. First, I will say, I will take P. So what is this P? Performing and exercising any such powers, any such duties which are imposed or are asked to be performed by the government of India. I repeat, performing or exercising any such powers as delegated by the government of India. Okay, so that is P. L is levying fee or other charges for carrying out the act of the purpose. यानी आप अगर कुछ भी हो रहा है, रेगुलेशन वगैरह हो रहा है या कुछ इंक्वायरीज कंडक्ट हो रही है, तो उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको खर्चा करने के लिए you have they levy the fee and other charges also on the participants, right? And then C stands for conducting inquiries and audits of stocks. ये वाला जो पॉइंट है ये आपका केस स्टडीज में आता है ज्यादातर, and you are asked to identify which function it is. So calling for information, conducting inquiries, undertaking inspection, conducting audits, ये सारा आता है आपका C के अंदर. So these are regulatory functions. I repeat, 2 registrations, 2 regulations, and then PLC, performing of activities under as delegated by the government of India. L is levying fee or other charges, and C is calling for information, conducting inquiry, and conducting audits, etc. Right? And last we come on to developmental functions. ये 3 ही है सिर्फ DTC. डेवलपमेंटल डी से स्टार्ट होता है, इसलिए आपका ये भी डी से ही स्टार्ट होगा. एंड व्हाट इज दैट डी, माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज? ये लेंगे हम डेवलपिंग कैपिटल मार्केट. सो अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट्स. और इसमें आपको कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज रखेंगे. सो आप इसे भी लिख सकते हैं, डेवलपिंग द कैपिटल मार्केट बाय अंडरटेकिंग और बाय अडैप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. सो डेवलपिंग द कैपिटल मार्केट बाय adapting a flexible approach. That is D. T is training of intermediaries of the in the securities market. So जितने भी हमारे brokers हैं, sub brokers हैं, solicitors हैं, underwriters हैं, इनकी training intermediaries की रहती है. So that is T. And C is conducting research and publishing information which is useful to all market participants. That is your DTC. I think I must have written it over here. Yes, it's DTC on your screen.
ओके, सो आई रिपीट द कोड्स अगर ध्यान से कर लोगे, डेवलपमेंटल का DTC है, पहला D क्या है, डेवलपिंग द कैपिटल मार्केट, T इज ट्रेनिंग द इंटरमीडियरीज, C इज कंडक्टिंग रिसर्च। वापस आ जाते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस पे। R4 दो रेगुलेशंस, सॉरी दो रेगुलेशंस है। किस किस के रेगुलेशंस है? एक रेगुलेशन है हमारा स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और बाकी पार्टिसिपेंट्स का। एक रेगुलेशन है टेक ओवर बिड्स का। दो रेगुलेशंस, दो रजिस्ट्रेशंस। किसका रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ओके, and then PLC. P is performing any such duties or powers as delegated by the government of India. L is levying of fees and other charges, and C is calling for information, calling for conducting audits and inquiries. And coming back to, सबसे पहले हमने क्या किया था? P4 प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में हमारा क्या था? पहला प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर को, दूसरा प्रोहिबिट करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, तीसरा प्रमोट करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, और लास्टली तब भी नहीं मानेंगे भाई तो पेनलाइज करना है, यानी इंपोज करनी है पेनल्टीज। And with this, my dear boys and girls, we have completed this chapter.